Today I will again discuss the important topic regarding the biology subject, and the topic is human diseases. And related with this topic, human diseases. So this is an important topic with our biology subject, and this topic is also related with the general science. General science and related with this topic we will discuss near about 4 or 5 questions in our today's lecture, and rest of the questions we will again discuss with our next lecture. So related with this human diseases, what are the important causative agents by which our body suffers from number of diseases? So first of all, the first disease is leprosy. The disease is leprosy. Leprosy, it is caused by bacteria. It is caused by bacteria. Next is HIV AIDS. HIV/AIDS. Human immunovirus AIDS, and it is caused by virus. Next is HIV/AIDS के बाद next is malaria. And malaria, it is caused by protozoa. First is leprosy, it is caused by bacteria. HIV/AIDS, it is caused by virus. Malaria, it is caused by protozoa. Next is tuberculosis. It is caused by, again, bacteria. Next is number 5, and the number 5 is ringworm. It is caused by fungus. So it is our topic, that is human diseases, and this topic is related with our biology subject as well as general science, and the various diseases, and these are caused with the help of the various causative agents. Number 1 is leprosy, it is caused by bacteria. Second one is HIV/AIDS, it is caused by virus. Next one is malaria, it is caused by protozoa, or the causative agent of the malaria is protozoa. Next is tuberculosis, and the causative agent of the tuberculosis is bacteria. And the last one is ringworm, and the causative agent of the ringworm is fungus. So related with this, we discuss important MCQ questions or objective questions. So our first question is, our first question is, leprosy is caused by. Leprosy is caused by. Leprosy is caused by which of the following? Which of the following? It is our first question related with our human diseases, and the question is leprosy is caused by which of the following? आपके पास options दी जाएंगी. Your first option is leprosy is caused by which of the following, and your options are: number 1 is bacteria, number 2 virus, first is bacteria, second one is virus, third one is fungus, and the fourth one is protozoa. Fungus and
the fourth one is protozoa. So these are the options related with the questions. Leprosy is caused by which of the following, and the options are bacteria, virus, fungus and protozoa. So out of these, leprosy is caused by which of the following? So leprosy, it is caused by bacteria. It is caused by bacteria. So the right option is bacteria, because leprosy is caused by bacteria, and it is the right answer. And why leprosy is caused by bacteria? Because it is a bacterial disease. Because it is a bacterial disease. It is a bacterial disease. So that's why leprosy is caused by बैक्टीरिया. यहां पर आप समझ सकते हैं बेटे क्यों हम कह रहे हैं कि लेप्रोसी इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बिकॉज इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. दैट्स व्हाई लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. अब इसका मेन देखेंगे बेटे. सो व्हाट इज द मेन रीजन? हमें ये रीजन देखना पड़ेगा. व्हाट इज द मेन रीजन क्यों लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होती है? एक तरफ तो हमने कह दिया कि लेप्रोसी बैक्टीरिया की वजह से इस वजह से होता है क्योंकि वो एक बैक्टीरियल डिजीज है. दैट्स वाई हमने कह दिया कि ये बैक्टीरियल डिजीज है. अब मेन हम रीजन देखेंगे कि क्या कारण है कि लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है. क्योंकि लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, हम इसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं. लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज. आप लिख सकते हैं बेटे, मैं यहां लिख देती हूं. लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज leprosy is also known as Hansen's disease. Hansen's disease. Leprosy is also known as Hansen's disease, and it is a long, ये क्या है बेटे, is a long term infection. Is a long term infection. शॉर्ट टाइम का ये इन्फेक्शन नहीं है. इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है. काफी लंबे समय के लिए ये इन्फेक्शन रहता है. एंड इज अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की हेल्प से ये इन्फेक्शन होता है. एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है. इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल सकते हैं. एंड लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है बाय बैक्टीरिया. एंड विच बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया है बेटे आपका माइकोबैक्टीरियम. Mycobacterium. So it's a long-term infection by bacteria, and the name of the bacteria is Mycobacterium or Mycobacterium or Mycobacterium. एक आपका Mycobacterium आप लिख सकते हैं. दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेट्रोसिस. दूसरा कौन सा है बेटे? लेप्रोमेटोसिस. 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 So this is the main reason. अब हम कह रहे हैं कि leprosy is caused by which of the following? So out of these options, bacteria, virus, fungus and protozoa, out of these options, leprosy is mainly caused by bacteria because it is a bacterial disease. And the main reason why leprosy is caused only just because of bacteria, because leprosy is also known as Hansen's disease, and it is a long-term infection that is caused by the bacteria, and the main bacteria by which this disease is caused, that is Mycobacterium or Mycobacterium lepromatosis. So that's why leprosy is a bacterial disease. Next बेटे हमारा next question है. Now we shift to the next question,
And your next question is question number 2. And what is the next question? Your question is, which of these is not a viral disease? This is question number 2, and question is, which of these is not a viral disease? आज हम मेनली 4 क्वेश्चंस ही इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे. नेक्स्ट हम रेस्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कल करेंगे. वायरल डिजीज. So which of these is not a viral disease? And your options are, number 1 is measles, सेकेंड नंबर पर है आपका रेबीज, मिजल्स, रेबीज. नंबर 3 पर आपका क्या आएगा बेटे? नंबर 1 मिजल्स, नंबर 2 रेबीज, नंबर 3 पोलियो. नंबर 3 पोलियो. नंबर 3 पर क्या आ गया बेटे? पोलियो. एंड नंबर 4 पर है आपका ट्यूबरक्लोसिस. So these are the options related with this question. Which of these is not a viral disease? Number 1 is measles, second one is rabies, number 3 is polio, and the last one is tuberculosis. आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो वायरल डिजीज नहीं है. ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास. आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन जो है वो आपका वायरल डिजीज नहीं है. सो आपके जो बेटे ये है आपके measles, your measles, number 2 rabies and polio. There are 3 that are related with the measles, rabies and polio. All these diseases are caused by virus. All these diseases are caused by virus. Caused by virus. So यहाँ देख सकते हैं बेटे आप, हमने कहा कि out of these, which of these is not a viral disease? Measles, rabies and polio. Last one is tuberculosis. So out of these 4 options, measles, rabies and polio, all these are caused by virus. That's why these are not a viral diseases, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली किसकी वजह से हो रही है? वायरस की वजह से हो रही है. इस वजह से ये वायरल डिजीजेज है. अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी में से डिजीज है जो कि वायरल नहीं है, वायरस की हेल्प से नहीं होती है. 3 तो हमने देख लिया, मिजल्स, रैबिज और पोलियो. ये सभी के सभी जो है वो वायरल डिजीजेस हैं. और क्यों वायरल डिजीजेस हैं? बिकॉज ऑल दीज आर caused with the help of a virus. अब हमारे पास बचा है कौन? ट्यूबरक्लोसिस. अब हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस बचा है. ट्यूबरक्लोसिस is caused by bacteria. Tuberculosis is caused by bacteria. So that's why it is not a viral disease. Caused by bacteria. Rest जो हमारे 3 थे, measles, rabies और polio, these are caused by virus. That's why they are viral diseases. But tuberculosis, it is not caused by a virus, but it is caused by the bacteria. So it is not a viral disease. So it is not a viral disease. So it is not a viral disease. So हमारी जो right option है बेटे वो क्या रहा हमारा? Tuberculosis. Because it is a bacterial disease and it is not caused by virus. That's why it is not a viral disease. तो यहाँ पर हमारी जो सही ऑप्शन रहेगी बेटे वो क्या रहेगी? ट्यूबरक्लोसिस की. एंड जो बैक्टीरिया कॉज करता है इसको, वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी हेल्प से ट्यूबरक्लोसिस होता है? सो द नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज, कौन सा बैक्टीरिया होता है? द नेम ऑफ द बैक्टीरियम, नेम ऑफ द
bacterium. So the name of the bacterium, कौन सा bacterium रहेगा बेटे, is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. अब हम देखेंगे बेटे what is the reason why tuberculosis is a bacterial disease and it is not a viral disease. So the main reason जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, इट इज नॉट अ वायरल डिजीज. तो उसमें क्या है बेटे, मिजल्स, रैबिस एंड पोलियो आर द वायरल डिजीजेस. क्योंकि हमने पहले भी कहा मिजल्स है, रैबिस है, पोलियो है, all these are the viral diseases because these are caused with the help of a virus, whereas tuberculosis is not a viral disease because it is not caused by a virus but it is caused by the bacteria and the name of the bacterium is Mycobacterium tuberculosis, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है Mycobacterium tuberculosis. And tuberculosis generally affects the, किस चीज को अफेक्ट करता है tuberculosis आपका, tuberculosis is generally affects the lungs, नोट कर सकते हैं आप. रीजन भी बताया जा रहा है आपको कि ट्यूबरक्लोसिस इज जनरली और ट्यूबरक्लोसिस जनरली अफेक्ट्स द लंग्स. सबसे पहले ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं. एंड द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, जो डिजीज कॉज होता है इस बैक्टीरियम के साथ, द डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो डिजीज कॉज्ड होता है, द डिजीज कॉज्ड बाय bacteria and the name of the bacterium is कौन सा बेटे, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. नोट कर सकते हैं बेटे. तो कौन से वायरल डिजीजेस हैं, किस वजह से वो वायरल डिजीजेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय वायरस, और कौन से डिजीजेस हैं जो बैक्टीरिया की हेल्प से कॉज होते हैं और क्यों बैक्टीरिया की हेल्प से कॉज होते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. और जो ट्यूबरक्लोसिस होता है इट जनरली अफेक्ट्स द लंग्स. सबसे पहले वो किस चीज को अफेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स में, सबसे पहले वो अफेक्ट करता है बॉडी की लंग्स को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, your next question is, that is your question number 3 and your question number 3 is क्या है बेटे आपका, ringworm is caused by, ringworm is caused by, किसकी हेल्प से ringworm होता है, ringworm is caused by, number 1 is virus, number 2 bacteria, virus, bacteria, number 3 fungus, and the last one is alga. So out of these options ringworm is caused by either virus, bacteria, fungus or alga. It is your number 2, number 3 and the last one is your number 4. So out of these options ringworm is caused by, so ringworm is a skin infection. हम ये कह सकते हैं especially ringworm is not caused by virus, bacteria and alga, but only the ringworm it is caused by fungus because it is a fungal disease, that's why ringworm is caused by fungus. So the right option is fungus. हमारे यहाँ जो right option है वो कौन सी है बेटा, फंगस है, बिकॉज इट इज अ फंगल डिजीज. एंड व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगस, सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस, वो कौन सा रीजन है, यहां नोट कर सकते हैं आप, रीजन व्हाई रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगस. रिंगवॉर्म इट इज अ स्किन इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म इज ए स्किन इन्फेक्शन.
Ringworm is a skin infection caused by fungi. Caused by fungi, not worms. Caused by fungi, not worms. यहां पर आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है, the most important thing that is to be learned. So the main reason is that ringworm, it is a skin infection and it is only caused by fungi, but it is not caused by the worms. So the main thing to be learned is that, so it is caused by the fungi and not by the worms. Not by the worms. So the most common fungi that cause ringworm, सबसे most important हमारा जो fungi है जो cause करता है ringworm को, the most common fungi that cause ringworm, the most common fungi that cause ringworm. अब यहां ध्यान रखें, the most common fungi that cause ringworm are Trichophyton. कौन कौन से बेटे? Number one is Trichophyton. The number one is Trichophyton. Trichophyton. It is first. Second one is, number one is Trichophyton. Second one is Microsporum. Microsporum. Number three, Trichophyton. Second one is Microsporum. And the third one is Epidermophyton. Dermophyton. So these are the most common fungi that causes the ringworm. कौन से? Number one, that is Trichophyton. Second one is Microsporum, and the third one is Epidermophyton. So these are the most common fungi that cause the ringworm in the human body. तो आपको तीन मैंने बता दिए हैं, most common fungi हैं जो कि ringworm cause करते हैं, and the naming is Trichophyton, Microsporum, and the third one is Epidermophyton. And next question, that is our last question in our today's lecture, and it is our question number 4. Rest questions को हम अपने next lecture में discuss करेंगे. So the next question is, which of these decreases in human body due to dengue fever? Due to dengue fever. Which of these decreases in human body due to dengue fever? Number one is, your options are, number one पर कौन है बेटा? Platelets. Number two, number one पर कौन है? Platelets. Number two, HB, hemoglobin. Number three, sugar, and the last one is water. So which of these decreases in human body due to dengue fever? जब बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डेंगू फीवर हो जाता है तो उनमें से सबसे पहले क्या डिक्रीज होता है? आइदर प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, प्लेटलेट्स का नंबर कम होना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है, या फिर आइदर बॉडी में वाटर का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है व्हेन बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द डेंगू फीवर. अब उसमें आपको ये देखना है कि इनमें सबसे पहले क्या डिक्रीज होता है जैसे ही बॉडी जो थी वो डेंगू फीवर से
सफर करती है। सो सबसे पहले इसमें जो डिक्रीज होगा बेटे दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स डिक्रीजेस इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में जो डिक्रीज होंगे वो क्या होंगे, प्लेटलेट्स होंगे ड्यू टू डेंगू फीवर। सो प्लेटलेट्स डिक्रीजेस platelets decreases एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। प्लेटलेट्स रैपिडली डिक्रीजेस इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द डेंगू फीवर। हीमोग्लोबिन शुगर या वाटर लेवल जो होता है वो उतना डिक्रीज नहीं करता है जितना कि आपकी बॉडी के प्लेटलेट्स होते हैं वो डेंगू फीवर से डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सो प्लेटलेट्स रैपिडली डिक्रीज, क्या होगा, प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स आर रैपिडली डिक्रीज, प्लेटलेट्स आर रैपिडली डिक्रीज, आर रैपिडली डिक्रीज्ड, rapidly decreased due to dengue fever. ड्यू टू डेंगू फीवर। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आपके रैपिडली डिक्रीज करेंगे ड्यू टू डेंगू फीवर एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग इन द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इन प्लेटलेट्स का, दीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ द बॉडी। तो यहां लिख सकते हैं हम, दीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट to prevent bleeding of the body. These are important to prevent the internal bleeding of the body. So due to decreasing level of platelets, अब इसमें हम कह सकते हैं, so due to decreasing level of the platelets in the body of the patient may suffered from, वो किस चीज से सफर कर सकता है, from the internal bleeding। क्योंकि सबसे पहले ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये रैपिडली डिक्रीज करते हैं ड्यू टू द डेंगू फीवर एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग ऑफ द बॉडी। दीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग ऑफ द बॉडी, prevent the bleeding of the body. So due to decreasing level of the platelets, so due to decreasing level of the platelets, so due to the decreasing level of the platelets, the patient may suffer from, the patient may suffer from internal bleeding. So this is the important role of the platelets in the human body. When the human body is suffered from the dengue fever, at that time the platelets they decreased very rapidly. उस टाइम जो प्लेटलेट्स होते हैं बॉडी के वो काफी रैपिडली डिक्रीज करते हैं ड्यू टू द डेंगू फीवर एंड दीज प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड व्हेन द लेवल ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी डिक्रीज्ड, at that time the patient may suffer from the internal bleeding. So on the behalf of that we can easily say that how platelets are important for the human body.
So when the human body is suffered from the dengue fever, at that time the level of the platelets they decreased very rapidly, because जो platelets का काम है that is to prevent the bleeding of the human body, and when the level of the platelets they decreased at that time, the body of the patient may suffer from the internal bleeding. So this is our these are important 4 questions or 4 important MCQ questions or objective questions related with the human diseases. तो आज जो हमने डिस्कस किए हैं बेटे, वो आज हमने important 4 questions को डिस्कस किया है रिलेटेड विद द ह्यूमन डिजीजेस, और जिसमें हमने देखा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ द डिजीजेस कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एंड द कॉजेटिव एजेंट्स कौन से रहेंगे उन डिजीजेस के बॉडी में. तो नेक्स्ट और इसी चैप्टर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो इन इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देखिए, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.